Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So, today we are going to start chapter number 1 of class 6, that is Fundamental of Computers. So, dear students, please open your books. So, here we will read about the basics of computer, that means the fundamental of computer. First of all, what is a computer system? So, a computer is an electronic device that accepts the data as input, output, processes the input data by performing mathematical and logical operations on it, okay, and gives the desired output. तो जो ये computer system है, ये क्या है? Computer is an electronic device, okay, and what does it do? It takes the input from the user, then it processes the data. After that, it gives us the desired output. Okay, students. Next is the computer system consists of 4 parts. कितने parts होते हैं कंप्यूटर के? 4 parts. And what are these 4 parts? First is hardware, second is software, third is data, and fourth is users. Okay, students. So what are these 4 parts? Hardware, software, data, and users. Okay, so what is hardware? All the parts attached to the computer, to the system, are the hardware parts. Monitor, keyboard, mouse, these all are hardware parts which we can touch and feel. Okay, so what is software? Whatever applications which are pre-installed or downloaded in the monitor in our computer systems, that are called software. Okay, and software is a set of instructions. Okay, students. Next is, what is data? Data is the input and information which we give as a input to the computer system. It can be text, it can be pictures, or it can be anything. Okay, students. Okay, and next, fourth part is users. So who are users? Users कौन है? We are the users who are using the computer system, who are working on the computer system, and the people who are giving instructions to the computer system. Okay, students. So as you can see in the picture, that this is data. Okay, so what is data? The information stored in the monitor, in the computer system, in the storage, that is the data. Okay, students. What is hardware? All the physical parts of the computer systems are called hardware. And what is software? All the applications that are pre-installed or downloaded in the computer system, which are the set of instructions, are the software. And who is a user? This girl sitting in the front of computer is a user who is giving the instructions to the computer to be performed. Okay, students. Next is, what are the parts of computer system? So your first part is that I explained to you right now, that is hardware. Okay, students. So this hardware, it consists of mechanical part that makes up the computer system as a machine. So hardware are the mechanical parts. Okay, जो कि क्या बनाते हैं? Hardware are the mechanical parts जो मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्यूटर को सिस्टम बनाते हैं, जो कि कंप्यूटर को एज अ मशीन वर्क करने के लिए वर्क कराते हैं. Okay, The hardware consists of physical devices of the computer. Hardware मतलब जितने भी physical devices हैं कंप्यूटर से attached हैं, वो सारे क्या है? Hardware है. Okay, these devices are required for input, output, storage and processing of the data. जितना भी storage input हम देते हैं, ठीक है, जितना storage हमें मिलता है कंप्यूटर से, जितना भी इनपुट हम यूजर एज ए यूजर वी गिव टू द कंप्यूटर, और जितना भी आउटपुट वी रिसीव और वी रिट्रीव द इंफॉर्मेशन एज अ स्टोरेज फ्रॉम द कंप्यूटर and the processing of the data, all the things is done by the hardware devices. Okay, students. Now, keyboard, monitor, hard disk drive, floppy disk drive, printer, processor and motherboard are some hardware devices. Okay, now what are the software? So it is a set of instructions that tells the computer about the task to be performed. Okay, तो software क्या है? एक set of instruction है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, and how these tasks are to be performed, और कैसे परफॉर्म करना है. प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं या डाउनलोड किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना. And they are written in the language understood by the computer. So what is that language which is understood by the computer? That is machine language. Okay, students. To perform a specific task, a set of programs and documents are collectively called software. देखो, प्रोग्राम्स का और डॉक्यूमेंट्स का जो सेट होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिवली सॉफ्टवेयर कहेंगे. हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन. जो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, जब तक हम हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तब तक हार्डवेयर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता. ओके, स्टूडेंट्स. सो द हार्डवेयर नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड. ओके, whatever data we want as an input in our computer, we have to type it through the
कीबोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हमें इंस्ट्रक्शंस देना होगा कीबोर्ड के थ्रू। अगर हमें कोई भी डेटा एज अ स्टोरेज सेव करना हो हमारे कंप्यूटर में, तो हमें वो स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। हार्डवेयर खुद से टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, इट इज ऑलवेज नीडेड टू बी इंस्ट्रक्टेड बाय द यूजर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे टास्क परफॉर्म करना है। द हार्डवेयर कैरीज आउट दीज टास्क। और व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ हार्डवेयर, हाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ हार्डवेयर, तो हार्डवेयर कैरी आउट करता है इन सारे टास्क को जो कि एज अ सॉफ्टवेयर इन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है हार्डवेयर को। ओके, नाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन द सेम हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क। ओके, हमारे एक मॉनिटर, एक कंप्यूटर सिस्टम पे हम बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर को हम लोड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, next is data. So data are isolated values or raw facts which by themselves has no much significance. For example, data like 29 January and 1994 just represent values. The data is provided as input to the computer which is processed to generate some meaningful information. Okay, so data is a isolated values. ये अपने आप में एक isolated values है। इनको जब तक हम इनके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक इन्हें कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 29 जनवरी हमने लिख दिया, सिंपल इट इज अ डेट, राइट। 1994 इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। सो जब तक हम इन्हें सिग्निफिकेंस नहीं देंगे, जब तक हम इन्हें कोई इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी इस डेटा के ऊपर, तब तक इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मीनिंगफुल इनपुट। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूजर्स? So users, there are people who write computer programs or interact with computer. Okay, they are known as the skinware, liveware, humanware or peopleware. Programmers, data entry operators, system analysts and computer hardware engineers fall into this category. Okay students, so जितने भी people जितने भी लोग हैं जो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं, वो सभी के सभी लोग किस में, कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? यूजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? स्पीड, accuracy, diligence, storage capability, versatility are some of the key characteristics of a computer. A brief overview of these characteristics are, so what is a brief? So now we will go through the brief overview. Okay students, your first characteristic is स्पीड। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट। हमारा कंप्यूटर जो है वो डेटा को बहुत ज्यादा स्पीड पे बहुत जल्दी प्रोसेस करता है एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या रेट होगा उसका? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। सम कैलकुलेशन दैट वुड हैव टेकन आवर्स एंड डेज टू कंप्लीट अदरवाइज कैन बी कंप्लीटेड इन few seconds by using the computer. कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिसमें आवर्स लग सकते हैं, डेज लग सकते हैं, बट अदरवाइज we can see that in generally the computer tasks are completed in few seconds. Okay, for example, calculation and generation of salary slips of thousands of employees of an organization's weather forecasting that requires analysis of large amount of data related to temperature, pressure, humidity of various places, etc. Okay, so such data require time, otherwise all the calculations in the computer are done at fast speed. Okay students, now your second characteristic is accuracy. Computer provides a high degree of accuracy. For example, a computer can accurately give the result of division of any two numbers up to 10 decimal places. Okay, so it can give us the high degree of accuracy. And at what level? At up to the 10 decimal places. Okay students, now diligence. What is diligence? When we use computer for a longer period of time, computer does not get tired or fatigued. Computer थकता नहीं है, ना ही, ठीक है, ना ही टायर्ड होता है, ना ही फटीग्ड होता है. इट कैन परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी. चाहे हम कंप्यूटर को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करें, लेकिन कंप्यूटर की कभी स्पीड कम नहीं होगी, उसकी एक्यूरेसी कम नहीं होगी फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड. सो दिस इज द डिलीजेंस ऑफ द कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट्स, now next is storage capability. Now large volumes of data and information can be stored in the computer and also retrieved whenever required.
बहुत लार्ज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, और जब भी हमें इसकी फ्यूचर में जरूरत होगी तो वी कैन ऑल्सो रिट्रीव द डेटा. ओके स्टूडेंट्स, अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड temporarily. If you want to store a limited amount of data, then that can also be stored for temporary time. Okay, in the primary memory. Okay, कहाँ store होगा फिर वो temporary memory के through primary memory में. Okay, secondary storage devices like floppy disk हो गए, compact disk हो गए, can store a large amount of data permanently. Okay students, next feature is versatility. So computer is a versatile in nature. So what is versatility? मतलब versatility का मतलब होता है कि you can perform different types of tasks at a same time. It can perform different types of tasks with the same ease. Okay, so computer can give its best at every step, at every task. Okay students, so at one moment we can use a computer to prepare a letter document, and in the next moment we may play music or print a document. Okay, so computer have several limitations too. सिर्फ फीचर्स ही नहीं है कंप्यूटर के पास, को सेवरल लिमिटेशंस भी हैं. दैट कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म दोस टास्क दैट इट हैज बीन प्रोग्राम टू डू. कंप्यूटर सिर्फ वही टास्क करेगा जो टास्क उसको प्रोग्राम करने के लिए दिए गए हैं. कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर. वो कोई भी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा. ओके, इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एज स्पेसिफाइड बाय द यूजर. जैसे जैसे यूजर ने स्पेसिफाइड किए गए इंस्ट्रक्शंस वैसे ही वो परफॉर्म करेगा, एंड डज नॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस. A computer is not a human, so it cannot take its own decisions. Okay, it will execute as per the instructions given to it. Okay students, next is applications of computer. So computers have proliferated into various areas of our lives. Okay, we may use computer to get information about the reservation of tickets, books in the library, medical history of a person, a place in a map, or a dictionary meaning of a word. The information may be presented to us in the form of text, images, video clips, etc. So this is how computer is useful to us. Okay, अगर हमें कोई रिजर्वेशन कराना हो टिकट्स का, बुक्स चाहिए लाइब्रेरी से, ठीक है, ऑनलाइन बुक्स चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री चाहिए पर्सन की, या फिर हमें कोई भी वर्ड में प्लेस को सर्च करना हो, डिक्शनरी मीनिंग वर्ड सर्च करना हो, सो वी हैव द एक्सेस ऑफ इंटरनेट on our computer so that we can get any information on it. Okay, so applications of computer in different fields. So कहाँ use होता है computer? In the field of education, in the field of entertainment, in the field of business, medical, science and engineering, home, advertising, sports. Okay, so these are the areas where we use computer. Now your first field is education. So computers are extensively used as a tool and as an aid for imparting education. Educators use computers to prepare notes and presentation of their lectures. Computers are used to develop computer-based training packages, to provide distance education using the e-learning software, and to conduct online examinations. Okay students, as you have seen during COVID-19 lockdown, the people, everyone around the world is doing their work online, right? Every student is studying online. Okay, so computer is a aid for imparting education, right? Whatever teacher want to prepare notes or presentations of their lecture, they can prepare through the computers. Okay students, also nowadays online education or distance education is available online on our computers. Okay students, so computer are extensively used as a tool and as an aid for imparting education. Second field is entertainment. Computers have had major impact on the entertainment industry. The user can download or view movies, play games, chat, book tickets for cinema halls, use multimedia for making movies, incorporate visual and sound effects using computers, etc. So how this computer is useful in the field of entertainment, okay, entertainment industry. So with the help of computer, a user can download and view movies. आप कंप्यूटर पे से डाउनलोड कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, बुक्स टिकट्स बुक कर सकते हैं, राइट? एंड यू कैन यूज मल्टीमीडिया, दैट इज साउंड इफेक्ट एंड विजुअल इफेक्ट ऑन योर कंप्यूटर. ओके, द यूजर्स कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक एंड डाउनलोड एंड शेयर म्यूजिक. आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, राइट? क्रिएटिंग म्यूजिक यूजिंग कंप्यूटर्स, और आप कोई भी म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स, राइट स्टूडेंट्स? Now we will study about the next field, that is sports. So a computer can be used to watch a game, view the scores, improve the game, play games such as like chess, and create games. They are also used for the purposes of training players. Okay students, so
कंप्यूटर स्पोर्ट्स की फील्ड में कैसे यूज हो रहा है? आपको कोई भी गेम देखना हो, राइट, यू कैन वॉच ऑन द कंप्यूटर, ओके। अगर आपको स्कोर्स देखने हैं, अपडेट्स चाहिए, तो आपको कंप्यूटर पर भी अपडेट्स मिल सकती हैं। आपको अपना गेम इंप्रूव करना है, तो कंप्यूटर कैन गिव अस द एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ आवर गेम, राइट। और आपको ऑनलाइन गेम्स कंप्यूटर पे खेलने हैं, देन यू कैन ऑल्सो प्ले गेम्स और क्रिएट गेम्स ऑन द कंप्यूटर, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट इज एडवर्टाइजिंग। कंप्यूटर इज अ पावरफुल एडवर्टाइजिंग मीडिया। कंप्यूटर एक बहुत ही पावरफुल एडवर्टाइजिंग मीडिया है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कैन बी डिस्प्लेड ऑन different websites, electronic mails can be sent, and reviews of a product by different customers can be posted, okay। आपको अपना बिजनेस इंप्रूव करना है, आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स किए, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स किए, और उन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स के नीचे जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या बाय करते हैं, आप रिव्यूज भी ले सकते हैं। रिव्यूज लेने के बाद आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, जहां आपकी कमी रह गई उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो दैट कैन ऑल बी डन विद द हेल्प ऑफ the computer system, okay students। Now computer are also used to create an advertisement using the visual and sound effects, okay। So you can also create the advertisement using the visual and sound effects, that is a multimedia system facility we have in our computers, okay। The web advertising has become a significant factor in the marketing plans of almost all companies। हर एक growing company has its own website and they are posting their advertising their business on that, okay, right। In fact the business model of Google is mainly dependent on the web advertising for general revenues। जो Google का business model है, it is completely based on the web advertising, okay students। So this is how computer is helpful in our advertising, okay, in doing advertising। Next field is medical। Medical researchers and practitioners use computers to access information about the advances in medical research or to take opinion of the doctors globally, okay students। So medical researchers जितनी भी होते हैं या फिर practitioners जितने होते हैं, वो कंप्यूटर का एक्सेस लेते हैं, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि क्या क्या एडवांसमेंट अराउंड द वर्ल्ड हो रही है मेडिकल रिसर्च में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, है ना। और डिफरेंट डॉक्टर्स के ओपिनियंस भी वो ग्लोबली ले सकते हैं, ओके। मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में जो कंप्यूटर स्टोर होते हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में आती हैं, इसका मतलब वो डेटा कंप्यूटर में स्टोर किया जा रहा होगा। तो कंप्यूटर की पेशेंट की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ऑलरेडी कहाँ स्टोर होती हैं, वो कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, ओके। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक अल्ट्रासाउंड मशीन, CAT scan machine, MRI scan machine। So these are the machines where where computers are playing the integral role, where computers are playing the vital and integral for working of these machines, okay students। So computers also provide assistance to the medical surgeons। medical surgeons को assistance कौन देता है? computers देते हैं during critical surgery operations like laparoscopic operations। जितने भी operations जो critical operations होते हैं, complex operations होते हैं, तो उन operations के दौरान जो सर्जन्स होते हैं उन्हें असिस्टेंस कौन देता है? कंप्यूटर देता है, क्योंकि कंप्यूटर में प्रॉपरली स्क्रीन पर जो हो रहा है बॉडी पार्ट्स के साथ वो दिखाई देता है, हमें प्रॉपरली डॉक्टर्स एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ क्या ट्रीटमेंट करना है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फील्ड वी हैव इज साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस। जितनी भी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं उसे परफॉर्म करने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं। फॉर डिजाइनिंग एंड मेकिंग ड्राइंग्स, डिजाइनिंग के लिए, ड्राइंग्स बनाने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर simulating and testing the designs, okay। Complex research applications like the launch of the rockets, space exploration, etc. are not possible without the computers। एवरीथिंग, मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस होते हैं, चाहे वो लॉन्च ऑफ रॉकेट हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, सैटेलाइट रिलेटेड वर्क हो, everything is carried out with the help of computer। So computer is a very 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 useful machine, okay students। Now computers are used in the field of government। So government uses computer to manage its own operations and
ऑल्सो फॉर ई गवर्नेंस, जितना भी ई गवर्नेंस में काम होता है, ऑनलाइन डेटा जितना भी रिट्रीव किया जाता है पॉपुलेशन से रिलेटेड या डिसीज से रिलेटेड या करंट सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड से रिलेटेड, अराउंड द कंट्री से रिलेटेड, so that is done on the computer. The websites of the different government departments provide information to the users. ठीक है, हमें जिस भी गवर्नमेंट के जिस भी डिपार्टमेंट से की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी स्कीम लॉन्च कर रहा है, कौन सी योजना आ रही है, तो या फिर नेक्स्ट यूथ के लिए क्या न्यू scheme hai, so everything is displayed on the websites of the respective ministries. Okay, so computers are used for the filing of income tax return. Okay, paying taxes, हम अगर हमें फाइल करना हो इनकम टैक्स रिटर्न तो हम कर सकते हैं, टैक्सेस पे कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, राइट, फॉर द एक्सेस ऑफ लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स, सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन द computers. Okay, so the police department uses computer to search for criminals using fingerprint matching, so all the matching work, right, victim identification work, or criminal searching work, so everything is done by on the computer in the field of government. Okay students, next field we have is home. Computers have now become an integral part of the home equipments. हमारे घर का एक बहुत ही pivotal integral part बन चुका है कंप्यूटर. At home people use computer to play games. घर पे people जो लोग हैं वो क्यों यूज करते हैं कंप्यूटर, गेम्स खेलने के लिए यूज करते हैं. टू मेंटेन द होम अकाउंट्स के कितना इस मंथ एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर कितना सेविंग हुआ है, तो घर के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर यूज किया जाता है. फॉर कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, and relatives by internet, for paying bills and for education and training. So this is how computers are used in the different fields, okay, around us. Now we'll learn about the how does computer work. तो ये जो कंप्यूटर है ये वर्क कैसे करता है. ओके, सो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन. हमें पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ये क्या करता है, एक इनपुट लेता है, इट एक्सेप्ट्स द डेटा, देन इट प्रोसेसेस द डेटा एंड देन इट जनरेट्स द आउटपुट, राइट. फिर वो आउटपुट को जनरेट करता है, फिर आउटपुट जनरेट करने के बाद उस डेटा को एज अ स्टोरेज भी रखता है. ठीक है, द concept of generating output information from the input data is also referred to as input process output concept. ठीक है, so this cycle is a input output process concept. So the input process output concept of the computer is explained as follows, right. So what is input? A computer accepts the input data from the user via an input device like keyboard से कंप्यूटर क्या करेगा, डेटा को एज ए इनपुट लेगा. ओके, द इनपुट डेटा कैन बी कैरेक्टर्स. वो कीबोर्ड के कीज क्या होंगे, या तो वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं या उन्हीं कीज का यूज करके हम वर्ड्स बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, या नंबर्स टाइप कर सकते हैं, या फिर सिंबल्स टाइप कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस. द कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट डेटा. अब जब हमने इनपुट कर दिया है डेटा, तो अब कंप्यूटर का काम क्या होगा, सीपीयू क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा. फॉर दिस इट परफॉर्म्स सम एक्शंस ऑन द डेटा बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स गिवन बाय द यूजर ऑफ द डेटा. जो भी अब जो हमने डेटा एंटर कर दिया है उसके ऊपर जितने भी प्रोग्राम्स, हमें सपोज आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, आपने सिंपली वर्ड आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला और एक पैराग्राफ लिख दिया, राइट. सो दैट elements, that alphabets which you give as an input to the computer are considered as input. अब जो उस पर ऑपरेशंस आप करेंगे, आपको उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, आपको उसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, आपको बीच में पैराग्राफ स्पेसिंग करनी है, तो all these instructions are performed by the CPU. Okay, ये प्रोसेसिंग कौन करेगा, CPU करेगा, राइट, कंप्यूटर करेगा. ओके, नाउ द एक्शन कुड बी एन अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन. ये एक्शन जो भी है आपका अरिथमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशन हो सकता है, राइट. आप डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन कर सकते हैं, या आप एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पैराग्राफ का फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, राइट. एंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस and the input are stored temporarily in the computer's main memory during the processing. अब जब प्रोसेसिंग हो रहा है, डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो वो एज अ टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करेंगे डेटा के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एज अ टेम्परेरी मेमोरी वो डेटा स्टोर होगा. स्टूडेंट्स, ओके, नाउ वी विल कम टू द आउटपुट पार्ट. द आउटपुट इज द रिजल्ट जनरेटेड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, राइट. जब हमारा डेटा प्रोसेस हो चुका है, अब हमें उसका आउटपुट चाहिए, तो सिंपली वी विल गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर either to print that whatever we have typed on the computer after that we have done the formatting, right. And after that processing part, if we want to print that data, we can get that data in the printed form. If we want to save that data in the storage of the computer, then we can also save that data, right. So the output may be in the form of text, sound, image or document etc. The computer may display the output on a monitor. Okay, computer कहाँ पे display करता है output, monitor पे display करता है, और send the output to the printer for printing. या फिर अब उसके बाद
हमें अगर प्रिंट आउट चाहिए हमारे डेटा का, तो हम क्या करेंगे, कमांड देंगे प्रिंट की और हमें आउटपुट मिलेगा थ्रू द प्रिंटर ऑन द फॉर्म ऑफ ऑन अ पेपर. ओके, प्ले द output, okay, etc. Now storage. The input data instructions and output are stored permanently in the secondary storage devices like disk or tape. अब जो इनपुट डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है और आउटपुट है, वो स्टोर होगा परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में. कहाँ होगा स्टोर? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारी हार्ड डिस्क हो सकती है, टेप हो सकती है, राइट. द स्टोर डेटा कैन बी रिट्रीव्ड वेन एवर नीडेड लेटर. ओके, आपने डेटा सेव कर दिया, अब जो स्टोर डेटा है वो कभी भी आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिट्रीव कर सकते हैं. So students, hope you like this chapter, hope you understood this chapter very well. Now we will go through the most important point of this chapter, that is the backup menu, right? That is the backup menu. The computer system consists of 4 parts. What are these 4 parts? Hardware, software, data and users. Program is a set of instructions written in language understood by the computer to perform a specific task. Speed, accuracy, diligence, storage capability, versatility are some of the key characteristics of a computer. We may use computer to get information about the reservation of tickets, books in a library, medical history of a person, a place in a map, or the dictionary meaning of a word. The government uses computer to manage its own operations and also for e-governance. Computer accepts the input data from the users by the input device like keyboard. So here you are done with the backup menu part, students. Now we will meet in the next video with a new chapter. Till then, keep revising, keep learning. Thank you, students. Bye bye.